अरे कैमरा ऑन है क्या? Okay, it's on. So guys, welcome back to my channel Bikerlog Varun. As you can see, I live in a place where the parking space is quite small. So today I want to talk about how this bike, how suitable it is for a tight parking place, you know. So many of my friends suggested me that don't go for this bike, it's a big bike, change your house. But I don't think all that is required because of the reason. If you see this drone shot, as you can see from the drone, I'm moving my scooty away and trying to, readjust the location of the bike and see how easy it is. The space looks a little congested. Currently the 5 bikes are parked in this place, and let me show you how I move this bike and how it looks, how easy it is, to turn it within this limited space, and all because of its amazing handling and the minimum turning radius in its segment. So this was it, just a turn back and the turn straight. The bike is on the way to the exit from this congested place, and there is no reason I'm going to shift my home because I don't have any problems. So guys, next thing I want to talk about this particular document. Now what exactly it is, it's the cost of all the accessories I've put in this bike. और मेरे को मेरे कुछ व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट किया था, तो सर और जितने भी फ्यूचर में देखने वाले लोग हैं, मैं आपको ये बताता हूँ कि ये इसके जितने भी पार्ट्स हैं मैंने कौन से लगाए और कौन सी कंपनी के हैं, इसके कॉस्ट क्या है। तो बट उससे पहले बैंगलोर का वेदर बहुत ज़्यादा क्लाउडी है, बारिश कभी भी हो रही है यहाँ पे, कोई उसका ईमान धर्म नहीं है, बारिश का कभी भी हो जाती है। और होता क्या है कि बाइक हो जाती है गंदी, बट आई लव राइडिंग इन रेन। तो सबसे पहले मैं बाइक को थोड़ा साफ़ करता हूँ, क्योंकि इफ़ आई कीप द डस्ट अवे आई विल प्रोटेक्ट माई बाइक फ्रॉम द स्क्रैचेस, और द पॉसिबिलिटी ऑफ स्क्रैचेस विल द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग इट स्क्रैच विल बिकम लेस। तो इसको वॉश करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे वॉश करता हूँ, और फिर एक ऐसी बात बताऊँगा जो इंटरनेट पे इस बाइक के बारे में किसी ने नहीं डाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप वो पार्ट लोने वाले हो या फ्यूचर में सोचने वाले हो कि वो पार्ट आप लोगे, तो ये वीडियो आप देखिए। वो पार्ट क्या है, उसको कैसे निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, वो आपको मैं वॉश करते हुए दिखाऊंगा, ठीक है। तो लेट्स वॉश दिस बीस्ट। So now the bike is on the center stand, and you saw how easy it is to put it on center stand. So let's now just wash this bike. One tip, when I wash the bike, I make sure that I massage the body of the bike with hands, because जो dust particles होते हैं वो easily निकल जाते हैं, scratch नहीं होता ज़्यादा। लेकिन अगर आप at the same time कपड़ा यूज़ करोगे तो there are chances कि body पे scratch लग जाएंगे, right? तो
वाइफ बैठी है पीछे। तो दैट्स व्हाट, बाइक हो गई वॉश। अब 3M क्लॉथ से मैं बाइक की बॉडी को क्लीन करूँगा, क्योंकि 3M फाइबर रहता है तो पानी को वो अपने साथ ले लेता है, मिट्टी को भी अपने साथ ले लेता है। तो आई ऑलवेज यूज़ अ 3M क्लॉथ। यू नो विच वन? दिस वन। सो गाइज, अब मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी बात जिसका वीडियो यूट्यूब पे नहीं है, बट आपका बाइकरलॉग वरुण आपके लिए लाया है। इफ़ यू आर अ BMW ओनर एंड यू गेट दिस काइंड ऑफ हेडलाइट प्रोटेक्टर, आई टेल यू हाउ टू रिमूव इट वाइल वॉशिंग द बाइक। सो गाइज, अगर आप BMW का हेडलाइट प्रोटेक्टर लेते हो, लेट मी जूम इन अ लिटिल बिट और आपको दिखाता हूँ मैं ये वाला हेड प्रोटेक्टर। सो इसको हम क्लीन करते हैं। So we cannot reach inside, right? So how to remove this? इसके अंदर don't be too conscious, इसको बस बाहर की तरफ खींचो, 1 2 बाहर आएगा। और ज़्यादा जूम करके दिखाता हूँ आपको। इसके यहाँ पे ये क्लिप्स हैं जो इसके अंदर जाते हैं और इसी के अंदर से बाहर आते हैं, और नीचे भी हैं। तो जो इसके क्लिप्स हैं ये इसकी बॉडी में अंदर जाते हैं, और इसी तरीके से हम इसको रिमूव कर सकते हैं बहुत ईजिली, और इसको साफ कर सकते हैं फ्रॉम बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। सो आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज हेल्पफुल फॉर दोज हु डोंट फाइंड दिस इंफॉर्मेशन एनीवेयर ऑन यूट्यूब और गूगल। सो गाइस, दिस इज हाउ आई क्लीन द मेन बॉडी पार्ट एंड ऑल द ग्लासेस एंड फाइबर्स ऑफ द बाइक। बट फॉर द रेस्ट ऑफ द पार्ट जो स्क्रैच ईजिली नहीं होते हैं, उनके लिए मैं यूज़ करता हूँ नॉट दिस क्लॉथ। ये भी एक 3M है पुराना तो बेसिकली वाई आई यूज़ 3M इज़ बिकॉज बहुत अच्छे से वाटर सोक करता है। तो इस 3M को जो अच्छे से वॉश किया हुआ है, मैंने बहुत अच्छे से वॉश किया हुआ है, बट अंदर थोड़ा बहुत रह जाता है, जो भी है। इससे हम बाकी की बॉडी की पार्ट बाकी की बॉडी जो स्क्रैच नहीं होती है उसको हम साफ करेंगे। Bikerlog Varun is clean, so the bike is my identity, you know. How clean it is, how dirty it is, it shows what I am. So guys, मैंने लास्ट वीडियो में आपको पार्ट्स दिखाए थे, बट मेरे को रिक्वेस्ट आई है टू नो द कॉस्ट ऑफ ईच पार्ट विच आई बॉट। सो गाइज, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये जो लो सीट है जो मैंने ली है, विच मेक्स द हाइट ऑफ द बाइक 840 mm from the ground. This seat costed me 40,800 rupees, and along with that I got a top case, my top box, which I've shown in the last video, costed me around 52,000, including the key, which is the original key of the bike. They just set it for that top box, and the backrest. So all this costed me 52,533 from BMW. I got this Turatec extension sidebars, which costed me, you know, around 28,124. Okay, the front forks costed me 8,592, and the shaft the shaft slider costed me 6,249. The ABS sensor protector costed me 2,342 rupees, and the side stand sensor protection costed me 3,905 rupees. Along with that, the radiator guards costed me 11,717 rupees. So this was it. Next, I want to talk about the jacket which I'm using. I got a question from one of my viewers, so I just want to include that in this video itself. I'm using a Rynox Stealth, and let me show you how it looks. Hello guys, welcome back. तो मैं ऊपर आया, मैंने मस्त बात लिया, टोपी चेंज करी, कपड़े चेंज किए, और अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो मेरा डॉलर है, डॉलर, यू नो, मैंने अपनी बाइक का नाम डॉलर रखा है क्योंकि
रिसेंटली हमने अपने एक डॉग को खो दिया है जिसका नाम डॉलर था, और वो डॉग हम लोगों से बहुत जुड़ा हुआ था और हमारी फैमिली के बहुत क्लोज था. बट सिंस वी हैव लॉस्ट हिम एंड रिसेंटली द बाइक हैज़ कम, तो मैंने इस बाइक का नाम डॉलर रख दिया है. एंड आई विश कि वो जहाँ पे भी है lives forever and his soul rest in peace. So guys, मैंने आप लोगों को बताया कि ये डॉलर के ऊपर मैंने कितना खर्चा किया है. अभी बहुत सारे पार्ट्स लगवाए हैं and all. And now I had a query from one of my viewer about the riding jacket which I wear, you know. And sorry bro, I don't wear Stealth L2, but the one which I wear is the Stealth jacket, which is right here in front of me. And when I bought this jacket, this was looking really premium. And why I chose Rynox was because first of all it is an Indian brand, I think, and it's better to support our Indian guys who are doing too much for the biking community. So let me give you a rundown of this jacket. But before that, I want to ask you, basically when we choose a jacket, we should choose it based on our need, you know. अगर हम city riding करना चाहते हैं, then mesh jacket is more than enough with rain liner inside just in case if it rains, or mesh jacket is basically meant for city riding and best for city riding. But this one is not for the city riding, but if you're touring, this is a touring class jacket, you know. This is a touring class jacket. So let me tell you why. So when you tour, okay, and for example if it is raining, you need to have a rain liner for this jacket. First of all, let's talk about his build quality. I am using this jacket from last, I've ridden my bike more than 20,000 kilometers wearing this particular jacket, and it still looks new. So it has some reflectors here and some reflectors at the bottom and on the top at the back side. So, and also this has, for ventilation, it has vents here on the lower stomach, and on the arms we have a liner of, you know, as you can see here, we have a mesh here. You can open up all these things, and at the back also we have some, you know, mesh kind of thing for ventilation. So when you're touring and it's hot outside, you have a lot of ventilations available in this jacket. Now what we think is, when the temperature is more than 40, 50, we are sweating a lot outside, we feel like opening all these vents, right? But it's not good actually for this part of the body. Opening vent and opening the this mesh is actually not a good idea. Why? Because your sun actually burns the skin, and in those conditions, if you close the vent, let your body sweat, and the front part of the jacket actually breathes, and it actually cools down your body again. But in the very hot conditions, more than 30-35 degrees, it's not recommended to open the hand ventilations. Second of all, it has a NOx protection at the back, and CE level 2 protections on the shoulders and on the elbows. And also it comes with the internal liners. Let me throw this away. It comes with a warm liner as well as the rain liner. So when they are really not required, just take them off. The jacket will be very light, and the build quality of the jacket is awesome. We have a big pocket at the back side of the jacket, you know. This is basically a pocket, so you can put your raincoat in this rain cover. It has an external rain cover, which is even more good for this jacket, because when it rains, and this material will not become heavy after the rain, because your external rain gear will be protecting you. And also
when I travel, I just put my upper rain gear and the pant rain gear both inside this pocket. This is big enough. Along with this, I have some pockets in the front where I keep all the, you know, the camera gears, the batteries, and things which I really need to access in hurry. And we have a waterproof pockets inside the jacket, which are also very good for keeping money or your cards or your wallet or anything which you want to protect from the jacket. So I definitely recommend this jacket to you all. And I bought this in Bangalore from 6K Isle of Man. And let me throw this away. So if you're looking for this jacket, please go for it. I give this a very big thumbs up and 5 out of 5 rating, because this is the best cheap budget touring jacket available in India. So, but soon I'll be planning to moving to some other higher brands for better protection, because now I'm riding a heavy bike. So if you are planning for touring, you can go for this jacket, or if you are going only for city rides and all, a mesh jacket which will cost around 5,000 rupees would be more than enough. So I hope you all like this video. And the box, it's right there. You have seen this before. This is the box which I bought from the BMW itself. So I couldn't give a review because at that time it was not on the bike and I was washing the bike. So if you have more questions, anything you want to ask, just let me know. So till then, take care and ride safe, live safe, be happy. Bye.